अब हम देख लेते हैं आपकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो ट्रू एंड फॉल्स है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. Indicate whether this statement is true or false. Put a circle around the correct answer. 1. Hindu untouchables of Calcutta wanted their city to be a part of Pakistan. इसका आंसर है true. Number 2. The Kashmir issue was taken up with the United Nations in January 1948. The answer is true. Number 3. Junagadh was a Muslim majority state. The answer is false. Number 4. Hyderabad was a Muslim majority state. The answer is true. Students, अब हम देखते हैं कि नंबर 5 क्या है ट्रू एंड फॉल्स का. The Qaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह said that the English and only English can be the national language of Pakistan. और इसका जवाब है false. Number 6. The Qaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह joined the Muslim League in 1906. This is false. Number 7. The Qaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह played an important role in तहरीक-ए-खिलाफत. इसका आंसर है false. Number 8. The Qaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह wanted to make Pakistan a theocratic state. The answer is false. Students, इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट चैप्टर नंबर 2 का ख़त्म होता है. अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस.